Yo. Shit, I forgot the mic. Yo, how are you guys? This is Managul MG. Just wait a sec, let me set up my microphone and then we'll start. Okay, so I think the voice is perfect. So और भाई लोग कैसे हो सब? क्या कैसा चल रहा है जीवन? क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ रहे हो? मैं तो पढ़ रहा हूँ. कल रह गया था यार. कल there were some things that came up and I couldn't stream yesterday. आज पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी लग रही होगी ज़्यादा. देख रहा हूँ. Maybe I'll purchase a ring light. Maybe. देखते हैं. After this. Yeah. वीडियो क्वालिटी में मैंने नोटिस किया था अपनी स्ट्रीम्स में कि लैग आ रहा था काफ़ी. लैग नहीं सॉरी. whenever मतलब मैं स्क्रॉल करता था न्यूज़पेपर में सो वो काफ़ी ब्लर चला जाता था. तो मैंने वो बिट रेट फिक्स कर दिया है. एंड आई थिंक वो अभी भी फिक्स होगा बट एक बार फिर से अपन चेक कर लेंगे. लेट मी सी सेटिंग्स में एक बार बिट रेट कैसा है. एक सेकंड. हाँ या बिट रेट सही है अभी. तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है. मैं एक बार चेक कर लूँ स्ट्रीम कैसी चल रही है. फिर अपन चालू करते हैं. अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात है. बढ़िया. जस्ट एक बार देख लें. एंड आई थिंक वो अभी फिक्स होगा बट एक बार एक सेकंड चेक कर लें. सही है सही है सही है सही है सही है. थोड़ी कैमरा क्वालिटी बेटर हो सकती है आई नो. पर ठीक है. बेयर विद इट बिकॉज मेन काम ये नहीं है. लेट मी ट्रांसफर ओबीएस कर. चलो चलो. सही है. अभी ओके. क्या बात है क्या बात है क्या बात है. चलो माइक ऑन है. सब ऑन है. ये कैप्चर सही हो रहा है. सही हो रहा है. क्या बात है. चलो लेट्स गो टू द फर्स्ट पेज. ये आज का न्यूज़पेपर है. कल वाला अगर देखता हूँ कैसे दिन जाता है उसके हिसाब से देख लेंगे. सही है. या इतना साइज सही है. ओके. लेट्स स्टार्ट. ओके. हाँ हाँ. So, SEBI directs 26 FPIs, foreign PIs, देखते हैं, to shut funds in 6 months. Okay. Pension funds, trust, and insurers, mostly from Canada, to be hit. Okay. Pension funds की बात हो रही है. Okay, let's read it. The Securities and Exchange Board of India last month sent out letters directing cancellation of registrations of 26 foreign portfolio investors from jurisdictions that are. Okay. You lost me there. Okay. तो सेबी ने लास्ट मंथ सेंट आउट किया लेटर डायरेक्टिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑफ 26 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स from jurisdiction that aren't signatories to a multilateral framework. So signatories to a multilateral framework for cooperation in securities regulation. Okay. That are not signatories to a multilateral framework for cooperation in securities regulation. The majority of them are based in Canada. Two people with direct knowledge of the matter. They have been told to shut down. Let's see कैसी आ रही है. ठीक है यार. image quality सही है. सही है.
They have been told to shut down their funds and unwind their positions from within the next 6 months. One of the two people said, requesting anonymity. The funds affected by SEBI's move include pension funds, trusts, and insurance companies. Okay. Affected by SEBI's move, say pension funds, trusts, and insurance companies. These are good funds, and Canada is a safe jurisdiction. ये कौन बोल रहा है? पर्सन जिच्छा जो ये न्यूज़ दे रहा है, I guess. One of the two people. Okay. दूसरा बंदा. These are good funds and Canada is a safe jurisdiction. The narrow view taken by regulator is restricting not just existing fund flow but also hindering fresh registrations from certain Canadian provinces. Sure. The person said a Canadian of Indian origin runs one such fund facing a problem in getting fresh registration. As of 31 December, investments from Canada and Indian stocks investments from Canada and Indian stocks and debt totaled 1.79 trillion, making it the seventh largest country in the terms of FPI flows into India. An email query sent to spokesperson for SEBI was not answered immediately. The matter relates to SEBI's introduction of new Foreign Institutional Investors Rules 2014. The older norms required funds to register with SEBI directly, while the new one allowed FPIs registered with custodians or DPs. It was meant to reduce the compliance burden on foreign investors. The changed norms, however, required FPIs to be resident of a jurisdiction whose securities regulator is signatory of international organizations of securities commissions or have a bilateral understanding with the SEBI. अभी पहले तो ये bilateral understanding का मतलब क्या है? Signatories, अच्छा देखते हैं. The changed norms, however, required FPIs to be resident of a jurisdiction. Okay, resident होने चाहिए उस jurisdiction में whose securities regulator. Okay, जो मतलब कनाडा का एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, वो उस ज्यूरिसडिक्शन का रेजिडेंट होना चाहिए, वो उस एरिया का रेजिडेंट होना चाहिए जिस एरिया का सिक्योरिटीज रेगुलेटर, जैसे इंडिया का सेबी है वैसे उस एरिया का जो सिक्योरिटीज रेगुलेटर है वो किसका सिग्नेटरी होना चाहिए? ये IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन. तो आसान शब्दों में अगर ये ए है, अरे यार अच्छा नहीं बन रहा, तो दिस इज ए, ठीक है. ये कौन है? FPI, ये FPI है, ठीक है, समझ जाओ यार FPI. और ये बंदा है बी, ये कौन है? सिक्योरिटी रेगुलेटर. तो मान लो जो ये बी सिक्योरिटी, ये एक एरिया है, ठीक है, ये इसकी जो सारी रेगुलेटर सिक्योरिटी रेगुलेटर, बी इस एरिया का सिक्योरिटी रेगुलेटर है और ए है इस एरिया में एक फर्म, एक FPI, सॉरी फर्म नहीं, एक FPI, ए इस एरिया की एक FPI. अभी मान लो अगर ए को सेबी के नए रूल्स के हिसाब से इंडिया में स्टॉक्स में या किसी भी चीज टाइप की इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजिस्टर करना है किसी DP के अंडर, तो जो ये बी है इसको किसका सिग्नेटरी होना पड़ेगा? IOSCO का, ठीक है, तभी ए रजिस्टर कर सकता है, नहीं तो ए रजिस्टर नहीं कर सकता. ठीक है, ये बात हो रही है. चलो okay, let's go. Canada has 4 agencies regulating various securities: Ontario Securities Regulator, Alberta Securities Commission, British Columbian Securities Commission, and Autorite. This, okay, we have to continue. Okay.
ये Marchis Financial. Of them, Ontario Securities Regulator and Autorit des Marchis Financiaries, I think I'm not pronouncing them right, are IOSCSO signatories. As a result, funds regulated by non-signatory agencies are ineligible to register in India as foreign portfolio investors. In June 2016, SEBI issued a frequently asked FAQ that said all foreign investors registered under the erstwhile regime were supposed to be grandfathered. Grandfathered? What a weird word. Allowing an existing operation or conduct to continue legally when a new operation or conduct would be illegal. ओके मतलब जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, अगर कोई पुरानी समय सी चीज चल रही है उसको हम बोल देंगे लीगल है, बट अगर वही चीज कोई बंदा एक नए सिरे से चालू करना चाहता है, अगर कोई और इंसान या कोई भी फर्म एजेंसी उस चीज को अभी नए नए से चालू करना चाहती है कि हम आज से ये कर लेंगे, पहले हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो इलीगल कहलाएगा. सो ग्रैंडफादर्ड, इंटरेस्टिंग. SEBI issued a FAQ that said the second of the two people. वहाँ पे दो. अच्छा. हम्म. तो मतलब इनको ग्रैंडफादर कर दिया जाना था पुराने वालों को कि वो लीगल है, वो चलता रहेगा. ऑल एग्जिस्टिंग FIIs and SAs sub accounts are deemed FPIs. Okay, they can continue to deal in Indian securities till valid period of FIR as a registration for which the fee has been paid. After the validity period, they can continue to deal with FPIs subject to payment, conversion and registration fees. Payment conversion का मतलब क्या है? Basis this understanding. Weird. Basis this understanding. Weird choice of words. Never heard these. These funds continued to exist for the past 8 years and held their positions and bets in Indian markets. Okay. But a month back, the regulator took a different interpretation of its own regulations and reviewed all these funds. Post the review, it said that it does not recognize the FAQs but what is laid out in the regulations and directed the funds to shut down and wind up positions. Wow, why did SEBI do this? It's interesting to think like उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी होगी कि हम अब रिव्यू कर रहे हैं और हम इनको बोल देंगे कि जाओ भाई भाड़ में जाओ तुम. Why did they do this? Interesting. The regulator moves comes at a time FPI have pulled out upwards of 38,000 crores in February from Indian markets. Okay, तो मतलब इतना पैसा अपने इंडियन मार्केट से बाहर निकला गया है तब आई है. All this while the funds continued in India basis under the understanding. फिर word आया ना basis the understanding. From SEBI issued FAQs. But suddenly, this change in policy comes after 8 years. It hampers the very idea of ease of doing business, for sure. Since it is a policy change, many other funds may receive such letters, putting the flows from Canada and such known IOSCO countries in jeopardy, said the second person. There are a total of 509 funds investing in India from Canada. Such letters have been issued to funds whose registration was up for renewal in 2022 and came from non-eligible jurisdictions. This is not the first time such policy changes have upset foreign investors. In April, SEBI issued a beneficial ownership circular which proposed something called a beneficial ownership circular.
which proposed that resident Indians and non-resident Indian people of Indian origin and overseas citizens of India cannot be beneficial owners of a fund investing in India. मतलब Indians, non-resident Indians, people of Indian origin, overseas citizens of India. ओके क्योंकि रेजिडेंट होना और सिटीजन होना में काफ़ी डिफरेंट होता है सिटीजनशिप और रेजिडेंट बट रेजिडेंट होने के लिए सिटीजन भी होना पड़ता है सो रेजिडेंट होने के लिए सिटीजन होना पड़ेगा सो देयर दैट ओके सो समथिंग मैं मार्क करके रख रहा हूँ बट मैंने कभी अरे अच्छा ठीक है कुछ नहीं ओके This caused an uproar of fund managers said that the focus should be on identifying the beneficial owners rather than restricting them. Circular was withdrawn and new one focused on identification was issued. And why did they do this? Like beneficial मेरे को इसके बारे में knowledge नहीं है. Let's study up on this sometimes. Should study up and actually create some sort of videos on how I studied up. Maybe I will. Let's see. Okay. IT searches offices of Hero IT, Income Tax Department. Chairman Manjul. Then, yeah, Income Tax Department on Wednesday carried out searches at 25 premises of two-wheeler maker Hero MotoCorp, including offices and residence of Chairman Pawan Manjul and other senior executives. Tax officials said the searches were conducted in Delhi, Gurgaon, and other locations in North India. Officially, the officials added requesting anonymity. The frequency of such operations by income tax authorities has intensified of late. Good choice of words. Intensified of late. With the department having searched offices and residences of real estate companies. Omax Limited, a mall भी है ना Omax Mall, लुधियाना में, and very old mall by the way, and the Hiranandini Group in just the past week. Okay, searches at office of some of the startups have also been reported. अच्छा भाई इनकम टैक्स मतलब हर जगह जा रही है स्टार्टअप्स पे भी जा रही है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी जा रही है जैसे हीरो हो गया एंड आई एम थिंकिंग ओमैक्स और हिरंदनी ग्रुप भी एक अच्छे लेवल पे कंपनीज है वैसे पब्लिक कंपनी है लिमिटेड लगाया हुआ है ओके The government's direct tax collections, including corporate tax and personal income tax, has exceeded the revised estimates for year ending. Okay. Wow. That's such a big, huge amount. However, non-tax revenue generation from asset sales and other avenues has fallen short of its ambitious estimates. Okay. Termed it as a routine inquiry by the tax authorities. कितना अच्छा like these are the choice of words that actually तुम्हारे दिमाग में एक suspicion डालते हैं है ना हाँ where's the text one just a sec yo just will take a sec words that arouse maybe not the right word but okay suspicion
चलो अभी जैसे भी लिखा गया है लिखा गया, लिखा रहने देते हैं, छोड़। अरे अरे यार, हद हो रखी है अभी इसको। यार ये मेरे को ना इसका यही नहीं समझ आता है, इस पर लिखूं कैसे। बस ठीक है, अभी ठीक है, जो हो गया सही। अरे यार, चलो अभी आगे चल रहे हैं। चलो, हो गया सही है अभी। Officials from the income tax department visited two of our offices in Delhi and Gurugram, and residents of our chairman abhi ho to gaya hai. We have been informed that this is a routine inquiry which is not uncommon before the end of the financial year. Which is not, अच्छा, इनको इन्फॉर्म किया है, देखो फिर सस्पेशन अराउज कर रहे हैं लोग। हमें बताया गया, हमें पता नहीं है, हम बोल नहीं रहे हैं कि ये कॉमन है, हम कौन है, हमें बताया गया कि ये ना एक रूटीन इंक्वायरी है, ये अनकॉमन नहीं है। जैसे वो होता है ना, एक जैसे एक क्रिमिनल, एक पता हो कि भाई इसने ही क्राइम किया है बट वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अरे सर कॉमन है, सर कॉमन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि हमने हमारा ये कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं है सर, ये तो होता ही रहता है ना सर, एंड पे करते ही है ना ईयर के, है ना, होता ही रहता है ना सर, ये तो करते ही रहते हैं, चलता ही रहता है, ये तो क्या बात कर रहे हैं। We reassured all our stakeholders that it continues to be business as usual. We at Hero MotoCorp are ethical and law-abiding corporate and maintain the highest standards of impeccability. Okay, let's turn to page. Mhm. Here. Okay. Impeccable corporate governance. In keeping with this philosophy, we are extending our full cooperation to authorities. हाँ, हम इन कीपिंग विद दिस फिलोसफी कि हाँ हम सारा कुछ बता रहे हैं, जो जैसा है वैसा ठीक है। On Wednesday, shares of Hero MotoCorp fell by 1.07%. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay. So ये इधर शायद इसीलिए लिखा है because this correlates with this news कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्यों चेक कर दिया। The IT searches are to verify certain suspected bogus expenses booked in the books of Hero MotoCorp, but also in the books of some of their uh, 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 of their related parties. The taxman could not understand some of the expenses booked for events and house expenses. The exercise is to verify those, said a person familiar with the matter. Income tax department did not disclose the reason for their searches since the search operations is still underway. The tax department will give clarity only once the operation is over, said IT officer on condition of anonymity. Hero Moto claims to be the world's largest two-wheeler claim and has a more than 50% share in domestic market motorcycle market. The company recently entered the electric vehicle segment with a new brand as a part of its plan to switch to cleaner technology. It will start selling its first electric EV in July under the Vida brand. Weird name, Vida. Vida. Really weird name. Weird choice for a name, right? Should keep this ad and yeah. Okay, this is it. This is it for the article. Vida brand with deliveries. Uh,
commencing later this year. वाइडा का कुछ मतलब होता है क्या? वाइडा वाइडा is a TV series. It's a 2018 drama. Either a nickname for life or possibly the male personal name Vida. Vida नहीं यार वो. Is it Vida? Imagine Vida. Okay. Maybe it's this. Life. Who suggests these names? कौन suggest करता है भाई? Maybe they are like क्या thinking होती है names रखने के पीछे? Would they sound cool and people would buy it? या मे बी अपने जो एड कैंपेन होगा उसमें बताएंगे कि जीवन लाइफ कि इसका मतलब लाइफ है तो इट मीन समथिंग गुड और समथिंग बड़ी बड़ी एड्स यार कोई एड्स तो होंगी ना हमारा माउस चलो नया आर्टिकल चलो 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 COVID curbs to end, but the use of masks to continue. Okay, the Union government revoked the provisions of the Disaster Management Act for containing the coronavirus pandemic after 2 years and a sharp drop in COVID cases. However, the use of face masks and SD norms would need to be followed. On Wednesday, the Home Ministry directed all the states and union territories to consider appropriately discontinuing the issue of orders and guidelines. To consider appropriately. अच्छे मैनरफुली अच्छे ढंग से गंदी बात नहीं करनी है अच्छे ढंग से कंसिडर करो discontinuing issues of orders and guidelines under the DM Act 2005 for COVID containment measures. The provisions of the act were invoked for the first time in March 2020. Okay. Following the Home Ministry Communication, Union Health and Family Welfare Secretary Rajesh Bhushan and letter to all state chief secretaries and Union Health and Family Welfare Secretary राजेश भूषण जी ने एक लेटर भेजा सारे स्टेट चीफ सेक्रेटरीज एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स issued directions to start resuming economic and social activities. The revoking of the provisions of the act will encourage social and economic activity including the opening of schools and offices. Okay, हो गए हैं काफ़ी जगह पे हमारे इधर तो हो गए हैं open schools. Economic activity has already picked up pace as reflected in goods and of course चल पढ़ लेते हैं अभी क्या बोल रहे हैं. It's काइंड ऑफ वो वाला आर्टिकल जो मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ. इतना लंबा लिखा है क्या? चलो जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं देखते हैं. Only this cases were reported. पिछली बार 25,000 पढ़ा था पेपर में परसों पढ़ा था जब मैंने 25 के अभी अंदर. With the pandemic bringing India and the world to a standstill, the Home Ministry has issuing orders and guidances since March 24, 2020 on the direction of National Disaster Management Authority. India reported more than 43 million COVID cases, around 5,17,000 deaths. Bhushan wrote that there is a need to follow risk assessment based approach to opening economic and social activities without losing gains made so far. The fight against pandemic, he directed the states and UTs to make evidence-based decision making while resuming economic activities. मतलब भाई देखो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेने के लिए बोल रहे हैं कि भाई देखो क्या चल रहा है कैसा सीन है सारी मतलब तुम्हारी स्टेट्स में कैसा चल रहा है कैसा सीन है कैसे लोगों की हेल्थ चल रही है कोविड के कारण तुम देखो और एक्शन लो अगर सही है तो खोलो चीज़ें
एविडेंस बेस्ड चलो, ऐसे मत बोलो, हवा में ही नहीं बोल देना। देखो, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो, वही बात है। रुको, सोचो और फिर एक्शन लो, क्या बात है, सही है। States need to watch the trajectory of cases in particular geographies to ensure the areas reporting. Have been holding the glass, I forgot about it. It's been 30 minutes since we're live. Okay. States need to watch the trajectory of cases in particular geographies to ensure the areas reporting positivity rate above 10% and bed occupancy more than 40% on either oxygen supported or ICU beds should undertake required enforcement, containment and restriction measures. तो एक वो भी दे दिया कि एविडेंस तो दे दिया भाई, एविडेंस बेस्ड, तो किस बेसिस पे, कौन सा एविडेंस देखेंगे, ऐसे देख लेंगे ऊपर खड़े होकर छत पे? नहीं नहीं, सब लोग बाहर ही हैं, अरे ठीक ही लग रहे हैं, वो देखो वो बच्चा हंसता खेलता जा रहा है, अरे वो बुढ़े अंकल भी वॉक पे जा रहे हैं, क्या बात है, कोविड तो गया, खोल तो सब, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करेंगे नहीं ना। कुछ तो एक गाइडलाइन होती है कि एविडेंस भी किस इकट्ठा करना है, मे बी इट्स दैट। सो watch the trajectory of cases in a particular region. अगर positivity rate 10% से above है and a bed occupancy 40% से ज़्यादा है, on either oxygen supported or ICU beds, should undertake required enforcement, containment and restriction measures. Mhm, mhm. Bhushan said in his communication, said social, sports, entertainment, academic, cultural, religious, festival related and other gatherings may be resumed. He said that offline classes without can resume, इसीलिए तो हमारे पेपर हो रहे हैं, बताओ। These institutions may however also use a mix of online and offline modes. Okay. Relaxing several COVID curbs is a logical step at this time given the drop in number of cases. However, we must ensure that this does not lead to complacency among citizens. Complacency. अरे ये क्या मतलब हुआ है, तुम लोग मीनिंग तो दो हैं, मतलब मैंने पूछा हिंदी में मतलब क्या है यार इसका, बताओ। अरे यार ये नहीं करना था। Happy with oneself and unconcerned. Okay. However, we must ensure that this does not lead to complacency among citizens. It is important that we, मतलब ऐसा ना हो कि भाई सिटीजन बहुत खुश हो जाएं कि हाँ भाई कोविड तो गया, वो कोविड तो गयो गयो गयो, हम कुछ ऐसे टिंगलक कलक कर रहे हैं उधर आराम से, ऐसा नहीं है भाई। ध्यान रखो तो भी थोड़े कोविड की अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखो यार, मतलब थोड़ा, वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा बट थोड़ा यार एक लहजा होना चाहिए बिहेवियर का, कोविड कोविड को ऐसे इज्जत दो यार। चलो बहुत ड्रामा हो गया। एंड कंटिन्यू टू गेट वैक्सीनेटेड एट द अर्लीस्ट, सेड पूनम मुत्रेजा, एग्जीक्यूशन डायरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये सब भी है, पॉपुलेशन फाउंडेशन, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं? पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। Oh, oh. Uses the power of entertainment through television serials, interactive voice response systems. Okay, what is this? Chatbots and family planning. Hmm. Mm-hmm. Is a NGO which promotes, advocates effective formulation and implementation of gender sensitive. Okay, okay. Hmm. Sorry about that. Okay, JRD data addresses population issues.
within the larger discourse of empowering women and men so that they're able to make informed decisions related to fertility, health, and well-being. Uh-huh. Reproductive and sexual health of adolescents, community action, pilots, and social and behavior change communication. Okay, okay, women's rights, Population Foundation of India. 50 years, this has been on since 1970. Maybe they're making a change, so how, where we work, and then let's, let's look at their impact. On some material. Let's see, let's not judge them. क्या बस इतनी ही स्टोरी थी? अच्छा, पैकेज. Pocket booklet, good. Yeah, that seems like a good initiative. फिर पता नहीं help होता होगा या नहीं, actually makes change or not, but they are trying. Mm-hmm. Okay, okay. I think it's, मतलब, in this they're helping women. It seems mostly about women. Actually, yeah, because women need more of it. So it's about like fertility, जितना थोड़ा थोड़ा पड़ा fertility, planning their family, sexual health of adolescents, stuff like that. Okay. बाकी अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा. Okay, let's get back to the newspaper. क्या कर रहे थे अपने? अभी ये देखो, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया कोविड बिहेवियर पे भी तो आ रही है, तो सिर्फ वही चीज़ें थोड़ी है कि इट्स रिलेटेड टू वुमेन एंड ऑल. इट्स काफ़ी, वैसे वुमेन वाला भी काफ़ी मेजर. It's a huge, actually a huge topic, yeah, an issue like that need to be tackled to actually look at their health in various underdeveloped regions of our country, or a little backward, using a strong word, backward regions of a country. So yeah, scientists and okay, scientists and researchers have not ruled out the possibility for fourth wave, and we are seeing surges in cases. Yeah, हर कॉलेज स्टूडेंट ये चाहता है ना, fourth wave, and we are seeing surges in cases in several parts of the world. Thus, relaxation of curbs must be accompanied by increase in precaution. Government plans to open up COVID-19 booster doses. Yeah, scaling up vaccine rollouts will make tens of millions or more eligible for precautionary. हाँ, ये तो कल पढ़ा था ना? Yeah, reported by Mint earlier. The expansion in the rollout will mean anyone who is 18 years or older will be eligible. In 22 March, community. Okay, इधर ही ठीक है. In 22 March, communication to chief secretaries of all states, Union Home Secretary Ajay Bhalla wrote, over the last 24 months, significant capacities have been developed for various aspects to management of pandemics, such as diagnostic, surveillance, contact tracing, treatment, vaccination, वगैरह 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 वगैरह. Okay, be back in a sec. Be back in a sec. Just be back in a minute. In a minute. ये आर्टिकल पूरा करना है, और एक आर्टिकल और बचा है, इसके बाद वो तो पूरा करके ही जाएंगे.
Yo, 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 we are back. I had to get some water. Uh-huh. Am I clear? Am I clear? I am clear. Yo, where were we? Something about population foundation. Oh, that was that. हॉस्पिटल्स में ये कर रहे हैं. हम्म, ठीक है यार. ठीक है. ठीक है. काफी है. I'm not gonna read this. What? Yeah. I'm gonna switch to another article. अच्छा. हो गए आर्टिकल खत्म हो गए. क्या बात है. क्या बात है. एक दो तीन ही होते हैं क्या मोस्टली, फिर एक बड़ी सारी एडवर्टाइजमेंट होती है ये. ओके. ओके. फिर तो मैं लाइव एंड ही कर जाता यार. अरे यार. चलो फिर पढ़ते हैं. चलो पूरा अभी कर ही लेते हैं. अभी चालू किया तो पढ़ ही लेते हैं. क्या ही बात कर रहे हो तुम. संक कॉस्ट फैलेसी की बात नहीं हो रही है इधर. तुम ये सोचो है कि संक कॉस्ट फैलेसी है कि भाई पढ़ना चालू कर दिया, इंटरेस्ट नहीं है तो भी पढ़ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. गलत सोच रहे हो तुम. क्या बात कर रहे हो. ऐसे पढ़ते हैं क्या हम. हमें थोड़ा इंटरेस्ट था, मेरा अंदर से मन कर रहा था कि क्या पता कुछ और नया पता चल जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं. ऐसे समझ समझियो. हाँ. ओके. ओके. ये क्या कर रहा था मैं पता नहीं. um, has a much higher level of awareness on nearly 1.8 billion doses. ये भी पढ़ लिया था on 3 March. Authorized boosters for every. ये भी पढ़ लिया था सारा. क्या पिछले आर्टिकल वाला छाप दिया इन लोगों ने. वैक्सीन टू ये भी था 8 to 16 वीक्स से. ये कर ये उन लोगों ने जो कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच का एक गैप था, द टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया था 12 to 16 से 8 to 16 पे. After taking into consideration overall improvement in the situation, preparedness of the government to deal with the pandemic, and DMA has taken a decision that there may not be any further need to invoke provisions of the Disaster Management Act. ये भी आ गया था. Okay, marriages and funeral rites may be allowed. Funeral rites. All shopping complexes, cinema halls, restaurants, bars, sports complexes, gyms, spas, swimming pools, सब खोल दो भाई, खोल दो. Full capacity. Can operate without restrictions. No restrictions on interstate and intrastate movement. All offices and may function without capacity. सब खोल लो भाई. बस यही बोल रहे थे. चलो पढ़ लिया. चलो भाई. अभी के लिए कल का न्यूज़पेपर देखना. अभी बच ही गया था. कितना टाइम हो गया. 45 मिनट्स. 1:40 हो गया. मेरे को थोड़ी देर में जाना भी है. चलो ऐसा करते हैं, कल का न्यूज़पेपर खरीदते हैं. जो कल मैंने स्ट्रीम नहीं करा था उसका भी पहला पेज पढ़ ही लेते हैं आज. पढ़ ही लेते हैं. पढ़ ही लेते हैं. पढ़ ही लेते हैं. ओके. ओके. आई एम गोना फेड टू ब्लैक. इतने में कल का न्यूज़पेपर खोलता हूँ. चलो हमने सोचा फेड टू ब्लैक करने को. क्या हुआ, ऐसे ही खोल लेंगे. तुम क्या बात कर रहे हो. अरे. 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 अरे आ गई आ गई. ये देखो यहाँ पे टैक्स ऑन क्रिप्टो कुछ देखा था मेरे को दूर से. ये आर्टिकल भी अच्छे होते हैं यार इनके, मिंट प्राइमर वाले.
हाइक इन फ्यूल प्राइसेस एलपीजी प्राइसेस स्पार्क्स इन्फ्लेशन वरीज। हाँ वो एरोप्लेन एयर जो अपना एयरप्लेन फ्यूल होता है उसकी प्राइस बढ़ी थी। ब्रेंट क्रूड। State run fuel retailers raised petrol and diesel prices by 80 paise. Yeah. The first increase since daily revisions were paused on 4th November before. Mm-hmm. Just a sec. हाँ आया मैं आया ठीक है हाँ ओके अगड़ गो ओके we'll read this maybe after some time but we'll do this article ठीक है करेंगे अपन करेंगे पक्का करेंगे I'll try my best to do this one ठीक है तो अभी के लिए जय हिंद हम चलते हैं अब अपना ध्यान रखिए न्यूज़पेपर पढ़िए और क्या और ये जो आर्टिकल्स पढ़े हैं इन पे अगर हो सके तो एक चीज करके देखिएगा इनको पढ़ के अपने शब्दों में किसी को नहीं समझा के खुद समझ के लिख के देखिए लाइक शॉर्टन देन डम जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट करना एक समरी लिखना वो लिख के देखो इसकी खुद ट्राई करो ये अगर हो सकता है इससे तुम्हारी राइटिंग इंप्रूव होगी और भी मजा आएगा हर आर्टिकल को पढ़ने में जब डाइसेक्ट करते हो तुम खुद ऐसे पढ़ के तुम उस पे ट्राई करोगे कि तुम इस पे समरी बना के लिख रहे हो ठीक है तुम ट्राई करोगे ना तुम एक बार एफर्ट डालोगे समरी बनाने में पहले तो तुम जो आर्टिकल का कंटेंट है जो भी उसमें वर्ड्स लिखे हैं जो भी वो कहना चाह रहा है वो तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से घुसेगा ऐसे अंदर ऐसे 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 होगा मोक्ष की प्राप्ति होगी इसके बाद जब ये होगा और क्या आर्टिकल समझ आता है और तुम्हारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है जनरल अंडरस्टैंडिंग या एक मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा बट आने लगे मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा ना वर्ड्स भी आने लगेंगे अच्छे अच्छे क्या बात कर रहे हो तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा दिमाग ऐसे खुल जाएगा ऐसे मूव ऐसे फिर तुम्हारे सर के पीछे एक गोल सा चक्कर होगा ऐसे उसमें से लाइट रेडिएट हो रही होगी ठीक है ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तुम करके तो देखो चलो ऑन दिस नोट we're gonna end this stream so yeah bye bye and take care jai hind